Hey guys, welcome back to SMC International. Today we are here with Shivansh and we've built on 4060 Ti and AMD platform पे इन्होंने build किया है 7000 latest series है. So he's basically gonna be gaming with it and here's the PC. It's all RGB as you can see. On the track. So the main components are 7600X. आपने AMD क्यों चूज किया है नया प्लेटफॉर्म? मोस्टली इसलिए, प्लस मैंने काफी रिव्यूज वगैरह भी देखे थे और मेरे दोस्त जो है मोस्टली सब AMD प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं पीसी उनका. मुझे लगा कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है तो AMD बेटर है. तो 7000 सीरीज में there is like good gaming performance. Even if 7600X की बात करें तो भी अरे रजत, इसको निकालो यहाँ से. कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, सारा फ्लो तोड़ देता है. Okay, so coming over to the motherboard, B650 Edge use किया है इन्होंने, which is sufficient enough for a 6 core. Even if 7800X लगाओगे तुम, that is good enough. 4060 Ti है, 4060 Ti में even तुम 1440p पे भी like e-sports games खेल सकते हो. तो आप कौन से games खेलने वाले हो इस पे मोस्टली डोटा, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, मोस्टली यही थी. हाँ, तो 4060 Ti is sufficient enough and he took the Gaming X Trio, which is a triple fan cooler. तो इनके temperatures भी overall सही रहने वाले हैं. And this build was 1.45 lakh सिर्फ the PC. And he also took a BenQ monitor. So 1.74 lakhs का total build है including monitor and the PC itself. Like how was overall experience आपका building with SMC? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मतलब काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, प्लस कम्युनिकेशन वगैरह सारे पार्ट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छा था. प्लस मेरे जिस फ्रेंड के थ्रू मैं रिकमेंडेशन से आया था उसने भी बताया था, उसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था. इसलिए मुझे लगा कि हाँ डेफिनेटली फर्स्ट क्लास चॉइस दोनों यही होनी चाहिए. Okay, so his friend is already built with us. उनका भी PC Corsair पे ही बेस्ड था white case and this is very similar. Same case था 4000D and overall pricing का कैसे like is the pricing high or was the pricing good? आई थिंक डिसेंट है. जो परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे एक्सीड ही मिलने वाली है मुझे. जो इनफैक्ट एक्सपीरियंस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, हाँ आई थिंक काफी डिसेंट है. सो ओवरऑल कितना रेट करना चाहेंगे आप SMC का एंड ओवरऑल हाउ द बिल्ड टर्न्ड आउट, आपको कैसा लगा बिल्ड? काफी अच्छा. इनफैक्ट मैंने भी CPU जो देखा, बाकी और भी पार्ट्स में अभी और एक्सप्लोर करूंगा जो मैंने लिया है. So that was it for the video for the PC guys, and he also took some Razer peripherals, which is the Death Adder V3 and a Black Shark V2 Pro. Keyboard he took the Black Widow V3, which is the 75% layout. So those are like covered for gaming if he needs anything like the headset. Also Razer का ये फायदा है कि you get 2-year official warranty with SMC, and अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो we straight up give you a new unit which is a RMA unit. एक ही सॉफ्टवेयर में इनका काम हो जाएगा. लाइक आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज Razer का एक ही सॉफ्टवेयर आएगा, उसमें तुम हेडफोन्स एंड माउस कीबोर्ड सब कनेक्ट कर सकते हो and that would be controlled via Razer sign app. So that was it for the video and thank you for building with us. थैंक यू.